Hello students, my name is Raj Jaswal. I am going to teach class 10th physics chapter 1st electricity. Today our topic is the electric current. So let's start this topic electric current. Electric current is defined as the amount of charge flowing through any cross section of the conductor in unit time. This is the conductor and this is the cross section. So number of charges या amount of charges flowing this cross section in unit time, this is called electric current. ओके यानी इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में यूनिट टाइम में जितना चार्जेस फ्लो करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. लेट क्यू बी द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम टी, देन इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाई आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. यदि इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में यदि क्यू चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इसको इंडिकेट करते हैं आई से, वह आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा. द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. It's because it has only the magnitudes. So now we define 1 ampere. Okay, so electric current through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through any cross section of the conductor in 1 second. यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर करेगा. यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर होगा. ओके, now we discuss the some points related to the electric current. First, a meter is used to measure the electric current in a wire. Yani a meter is the device to measure the electric current in the circuit. Okay. Second point, an ammeter is always connected in series in an electric circuit as shown in figure. यानी सर्किट में अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में. अब वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. थर्ड पॉइंट, अमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस. अब वोल्ट मीटर क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है. फोर्थ पॉइंट, इफ एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर then I is equals to q by t, and we know that q is equals to ne, so I is equals to ne upon t. This is the important results. We can use this result to find the number of electrons passing through any cross section of the conductor if the current is given. Next point, the direction of electric current is always to the direction of moving proton, या opposite to the direction of मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. यानी इलेक्ट्रॉन जो करंट का डायरेक्शन होता है सर्किट में वह इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में होता है या प्रोटॉन के डायरेक्शन में होता है. ओके, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट इज पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द in the circuit is negative terminal of the battery to the positive terminal. That's why the direction of the current in the circuit is positive terminal of the battery to the negative terminals of the battery. And two important relationship between the units. 1 milliampere, am here milli, 1 milliampere is equals to 10 power minus 3 ampere, and 1 micron ampere is equal to 10 के power minus 6 ampere. Now we discuss the least count of the ammeter. Okay, the values of one division on the scale of the ammeter is the least count of the ammeter. Let there are the 10 divisions between
OA mark and 1 ampere, 0 A mark and 1 ampere mark on the scale of a meter. So 10 division is equals to 1 ampere. So 1 division is equals to 1 upon 10 ampere, so 0.8 ampere. Hence least count of the ammeter is 0.1 ampere. यानी 0 एम्पियर और 1 एम्पियर के बीच में यदि 10 डिविजन्स किए गए हैं तो उस केस में उस अमीटर का जो लिस्ट काउंट होगा वो 0.1 होगा. ओके. यदि सपोज 5 डिवीजन किए होते हैं तो 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाता. सो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एम्पियर हो जाता, तो 0.2 एम्पियर हो जाता. दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर. ओके. Similarly, list count of the voltmeter is same as the list count of the ammeter. The values of one division on the scale of voltmeter is the list count of the voltmeter. So let there are 10 divisions between the 0 volt mark and 1 volt mark on the scale of voltmeter. So 10 division is equal to 1 volt. So 1 division is equal to 1 upon 10 volt. So 0.1 volt. Hence the least count of voltmeter is 0.1 volt. Okay. Let's the problems. An electric bulb drawn a current of 0.2 ampere where the voltage is 220 volt. Calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour. Okay. So given here what? Electric current I is equals to 0.2 A and time here what? 1 hour. 1 hour we convert into seconds, so 3600 seconds. And calculate the amount of electric charge, it means Q. So we know that I is equals to Q by T, so Q is equal to IT. So I here 0.2 and T here 3600. So what will get here? 720 coulombs. This is the answer. Next question. In a particular television tube, a beam of electrons is emitted. The beam current is 80 micron ampere. How many electrons strike the screen of the TV every second? Okay. So in this problem here, I is given 80 micron ampere, and we know that 1 micron ampere is equal to 10 power minus 6 ampere. So 80 into 10 power minus 6 ampere. So we can write here 80 into 10 power minus 5 ampere, and T is equals to 1 second. So we know that I is equals to Q by T and Q is equals to N. So I is equal to N E upon T. So we can write N is equals to I into T upon E. I here 8 into 10 power minus 5, T here 1, and E 1.6 into 10 power minus 19. After calculating we will get 5 into 10 power what? 14. This is the answer. Thank you. Rest will be discussed the next class.